Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that today we are going to start unit number 4, Religious Festivals in Pakistan, and today I am going to give you the full introduction. जैसा कि आप इसके नाम से ही गेस कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं पाकिस्तान में रिलीजियस स्पेसिफिकली हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में. So my dear students, let's quickly look at the student learning outcomes given on the first page of unit number 4, that by the end of this unit all the students will be able to learn these points. और मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ इंट्रोडक्शन में और वैसे भी कि these student learning outcomes are for the parents and the teachers to understand कि हमारा बच्चा ये सब points जो है वो ये learn कर लेगा इस unit के आखिर तक. So my dear students, let's start. In this unit you will learn about the religious festivals of different faiths. You will also learn how people celebrate their festivals and the reasons behind celebrating their festivals. So my dear students, मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ जो religions हैं, वो कैसे अपने festivals को celebrate करते हैं, कौन कौन से festivals वो celebrate करते हैं, and what is the reason behind कि उनको celebrate करने की वजह क्या है, ये तमाम बातें जो हैं हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. So my dear students, the first lecture, when we will start the first lecture, all the students will be able to understand why Muslims celebrate Eid al-Fitr. We will only discuss about Eid al-Fitr in the first lecture, and students will also be able to describe how people celebrate Eid al-Fitr. So the reading page is given here. You will learn about religious festivals, the reason behind celebrating religious festivals, and we will discuss about specifically Eid al-Fitr only, कि क्यों ईद उल फितर मनाई जाती है, कैसे इसको मुसलमान मनाते हैं, और डिफरेंट जो रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बाय द मुस्लिम्स उनको सेलिब्रेट करने की क्या वजह होती है. वी विल डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 2, एंड इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल understand why Muslims celebrate Eid al-Azha, and they will also be able to describe how people celebrate Eid al-Azha. Here is your reading page. Different reasons है Eid al-Azha को मनाने के पीछे, और इसके पीछे एक पूरा वाक़या है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है. When we will study this lecture, तो तब मैं आपको वो पूरा जो वाक़या है वो सुनाऊंगी. And then we will move forward towards lecture number 3, because we are celebrating about different religious festivals, and we are talking about different faiths, not only just Muslims. So in lecture number 3, all the students will be able to identify other religious and cultural festivals of other faiths celebrated in Pakistan. पाकिस्तान में जो दूसरे मज़ाहिब हैं और दूसरे जो फेथ्स हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल्स अपने सेलिब्रेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम, दिस विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 3. एंड इन लेक्चर नंबर 4 इट विल बी अ प्रोजेक्ट. हम इसको बनाएंगे, आप एक चैरिटी बॉक्स बनाएंगे और चैरिटी डे अपने स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे. हाउ यू कैन सेलिब्रेट इट, वी विल डिस्कस इट इन लेक्चर नंबर 4. एंड लेक्चर नंबर 5 विल बी अ रिव्यू ऑफ दिस यूनिट. सो हम इसमें जो है रिविजन करेंगे पूरे यूनिट की, तमाम रीडिंग पेजेस की. ऑल द ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिस्कस्ड अगेन, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी प्रोवाइडेड विद एन असेसमेंट शीट, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस unit. So my dear students, I hope you will thoroughly enjoy this unit and you will learn a lot of new things from it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.